Meanwhile, farmers in Maharashtra are now at the center of the pole battle in the state. The recent devastating hailstorm, which wreaked havoc on both life and crop, has become the latest poll issue in the state. Political parties are falling one over the other, promising sops to farmers, unmindful of the model code of conduct in place. Not to mention the blame game underway between political leaders in the state. Looks a lot like Kashmir, but it's not. These are the plains. The crop-growing fields of Maharashtra hit by devastating hailstorms. A freak storm which has left farmers of Maharashtra high and dry. Crop area of nearly 10 lakh hectares across 28 districts of Maharashtra has been affected. This includes near total loss in 50,000 hectares of fruit crops. The hailstorms have affected nearly 50 lakh farmers, with losses being pegged at over 4,000 crore rupees. इतना बड़ा लोगों का सब नुकसान है, खेती बाड़ी का, घर का, ढोरों का, इंसानों का, सब फावड़ों से समेटना पड़ा घर को. ये 3 एकड़ खेत है, पूरा सो गया घर से. काल सगळी सरी नुकसानी झाली. आम्ही मरता मरता बचावलं. कालपासून आम्हाला अन्नाना पन्नाना चहा बी सुद्धा पोटात नाही आमच्या. सऱ्या घराचे थर आमच्या घरात पडले. सर पूर्ण घर पडलं. दोन्ही घर आमचे पडले. The issue, coming as it does so close to the Lok Sabha polls, has given political parties enough ammunition to target each other. All political parties are sending teams to the affected areas and promising relief to the affected farmers. मुझे इस बात का दुख है कि देश का कृषि मंत्री महाराष्ट्र का है. एक हमारे महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग नेता जब देश के कृषि मंत्री होते हैं तो इस मराठवाड़ा में 2 साल अकाल पीड़ित और इस साल ये गारपीट पीड़ित किसानों को अगर साथ देने के लिए आते थे तो हमें आनंद होता था. तो जनता तो उनको नाकारने वाली है. जो भी उनके ऊपर कर्जा है वो माफ़ होना चाहिए और जो बिजली जो है वो भी माफ़ होनी चाहिए और आगे 6 महीने तक बिजली माफ़ हो, ये भी हमने मुख्यमंत्री जी को डिमांड की हुई है. Raj Thackeray has cancelled the entertainment program on his party's foundation day. The NCP and the BJP have also scrapped their election rallies in the Marathwada region. काश्मीर आहे की काय असं वाटतंय? म्हणजे बीड आहे की काश्मीर आहे? एवढी सगळी परिस्थिती महाराष्ट्रावरती बिकट आलेली आणि हे गारपिटीने बळी गेलेले आहे. पुढे काय होणार? जो शेतकरी आहे तुम्ही विचार करा की ज्याच्या डोळ्यात समोर त्याचं तरारलेलं पीक आहे. Politicians are, however, unanimous on the fact that the model code of conduct should not in any way hamper the immediate relief and rehabilitation of the affected villagers. With Kishore Nigam in Aurangabad and Kamlesh Sutar in Mumbai, Bureau Report, Headlines Today.